Hello everyone. We all know that recently the timetable for the board examinations has been declared and a question arises whether the examination should be conducted or not. Although I know many of the students must have already decided that there shouldn't be any examinations in the month of June and July. हमने ये डिसाइड ही कर लिया है कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है हमारे लिए ये गलत है और गवर्नमेंट इन एग्जामिनेशंस के चलते हमारी जान जोखिम में डाल रही है। खैर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ये वीडियो आप खुद, जो दोस्त आपके जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन अपेयर कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स, प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। I recently went through some social media platforms. Students are appealing and the appeal says live life, leave examinations. Justice for board students. Say no to examinations. Look, I know everybody is fearing the present scenario, but there are more than 1,25,000 corona cases all over the country and they are still increasing. And the government knows that the situation might get worse in the coming future. So, you should understand that everyone in the country is struggling for you. Your government, doctors, police, all of them are giving their best to save your lives. और हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे भविष्य के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे एग्जाम्स का डिसीजन लेके हमारी जान जोखिम में डाल रही है। ये गलत है बच्चों। I also discussed my opinion with some professionals and influencers, and you should definitely look at their views too. Good morning. I'm Dr. Parimala, Academic Director of the Faith Foundation Global School, Devas. Ever since the outbreak of the pandemic, it has been a very, very difficult time for all of us, especially for the students who had to be facing the board examinations. Not only did the examinations get postponed, there was a lot of uncertainty as to when it would be conducted. And now that the CBSE and other boards have announced the dates for the remaining examinations, which would be conducted either in June or in the first fortnight of July, there has been a lot of talk about it and a lot of opinions regarding this in the print and in the social media, especially by the parents and the students. Some of them feel that there is no point in having an examination now and it's better to follow the policy of a general promotion, while others feel that a further postponement of the examinations is needed. As an educator, I can say this: we cannot do away with examinations, especially at the level of grade 12. It is at this point that examinations and the marks scored makes a big difference in the life of a student. Based on the performance of a student at this level, the student is able to choose and opt for a career of his or her choice. And if we do not have examinations and have a general promotion policy, then I'm sure it would be very unfair for the students who have put in a lot of effort to do well at this point of their career. Secondly, postponing the examinations further has no meaning according to me. Already 3 months have gone by with a lot of uncertainty and it has been a kind of emotional trauma for the students. So I feel that it is better to conduct the examinations and get away with it at the earliest so that students also have a peace of mind and then can focus on what next after grade 12. So my suggestion to both students and parents is, let us have the examinations and let us finish it at the earliest and move on with our lives. Ultimately, I think all of us have to face the reality of the situation. Thank you and hope all of you remain healthy and safe. Hello friends, I am Amit Kumar Dharmani, Company Secretary in Practice, and I want to discuss regarding appearance in examination. Since we are looking over this pandemic since last few months and understood that it may take longer time, and exams relating to school, college, professional courses, banking, entrance examinations should be scheduled now only because time is precious and you should not waste the time. Number 2, exams is important for analyzing your own skills and caliber. Number 3, exams will lead you to another level of your course.
Number 4, you should take all the precautions for being safe from this virus and accept this challenging time and create the history. Wish you all the very best. Thank you. हेलो एवरीवन, आई एम काजल खेतवानी। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे यूमर्स के बारे में, एग्ज़ाम कैंसिलेशंस को लेकर, बच्चों के ट्वीट्स है बहुत सारे इस बारे में कि से नो टू एग्ज़ाम्स या फिर जस्टिस फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी सिर्फ एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हुई है गवर्नमेंट ने, जो कि अनाउंस किए फ़िलहाल की सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए। आई नो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, बट एक डेट तो आनी थी। देखिए, क्योंकि आप लोग वैसे भी पहले जिद कर रहे थे कि डेट्स नहीं आई हैं, अब जब डेट्स आ गई तो फिर ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं है जहाँ पे आके आप अपने हिसाब से आप डेट सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जाके गवर्नमेंट पे भरोसा करना पड़ेगा कि अगर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहती हैं तो गवर्नमेंट इतनी साउंड है कि वो अपने डिसीजंस सही तरीके से ले सके। थोड़ा भरोसा कीजिए, शांति रखिए और ये ध्यान में रखिए कि आप ऑलरेडी अपने 2 एकेडमिक मंथ पीछे हैं। अगर जून में भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो अभी इतना टाइम मिला है जहाँ पे आप 60 स्कोर कर सकते थे, अब आप 80 स्कोर कर सकेंगे। ट्रस्ट में यही टाइम है जब अपना स्कोर सुधर सकता है। तो फिर कीप काम एंड स्टडी। Hello everyone, my name is Nishtha Agarwal and I'm a company secretary. I know the conditions are terrible due to the pandemic, not only to us but to the whole world. But we shall avoid running from the situation and we should deal with it. Boldly dealing with the situation is what we have been taught since the childhood. Same is the case with class 12 students. I request all of you to please face your examinations. This is for your better future. Government will never put you into any danger. Not only you, but the invigilators are also going to be there at the centers. It is us who has to stay along with this corona hand in hand. Not only this, but we should learn social distancing and involve it into our daily routine. I would request all of you to please face the situation boldly and not go against the government. You never know how long is this going to sustain. You cannot sit home and cannot skip from all your responsibilities and all the adverse situations. You have to deal with it boldly, and so stay safe but do write your exams. Hi, I'm Sagarika Rajani, a psychologist and founder of Confabulate, a platform that works for student counseling and life skills training. Students, ये पेंडेमिक आपके लिए और सभी के लिए एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है. From business class to labor class, everyone is suffering. We understand that. लेकिन एग्ज़ाम जैसे नॉर्मल से प्रोसीजर को लेकर अगर आप इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे तो आपका स्ट्रेस मल्टीप्लाई ही होगा, रिड्यूस नहीं होगा. इसलिए वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि ये जो आपके रिसोर्सेज हैं, योर इंटरनेट, योर एनर्जी, योर टाइम, प्लीज़ इसे सही डायरेक्शन में यूज़ कीजिए. बिकॉज ऑल दिस इशू इज़ जस्ट अ टेम्प्रेरी इशू. ये आज नहीं तो कल रिजॉल्व होगा. आपकी एग्ज़ाम्स होगी कंडक्ट, अभी नहीं तो बाद में. और फोकस कीजिए अपने परमानेंट लाइफ गोल्स के ऊपर, बिकॉज दे गोना स्टे विथ यू इन द लॉन्ग टर्म. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. In the end, I would like to say that time runs against everything and everyone. If government has taken any decision, they must have taken it wisely. हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कोई भी डिसीजन लेगी तो वो गलत नहीं लेगी. It's high time that we trust our government and their decisions. बिकॉज हम उस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जिसके आगे बड़ी से बड़ी सुपर पावर्स ने आज मदद के लिए हाथ फैलाए हैं. तो ऐसी गवर्नमेंट हमारे लिए कोई गलत डिसीजन तो नहीं लेगी. तो आज हम ये निश्चित कर लें कि हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन सब चीजों के लिए और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि सिचुएशन वर्स्ट हो रही है और वो हमारे फेवर में नहीं है तो गवर्नमेंट खुद एग्जामिनेशंस को और आगे पोस्टपोन कर देगी. इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. एक सवाल ये भी है कि सर अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है. तो बच्चों, ये एक सामान्य ज्ञान कॉमन सेंस की बात है कि अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बेयर करेगी. तो आप इस बारे में नहीं सोचिए. आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ाई में लगाएं. टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी एंड स्टडी वेल. I wish you all the best for your exams and your coming future. Thank you.